नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर एक चीज है ह्यूमन ब्रेन का, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन, आपके दोस्त हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपकी मम्मी पापा से लेकर सभी के दिमाग में एक प्रॉब्लम है, दैट इज वी वांट थिंग्स सिंपल। अगर कोई हमको कोई सिंपल डेफिनेशन देता है कि भाई दिस थिंग वर्क्स बिकॉज कोई एक चीज की वजह से, कोई सिंपल डेफिनेशन, अगर आप सोचे कि पहले के जमाने में लोग ये मानते थे कि बिजली हुई या फिर बहुत ही बाढ़ आ गई तो बिकॉज की देवता क्रोधित हो गए, मतलब वो गुस्सा हो गए, इसीलिए वो चीज हुई, एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव इट। बट जब इवन साइंस डेवलप हुआ उसके बाद भी काफी ज्यादा लोग जो है वो चीजों में बिलीव करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब ये आप ये कहते हैं कि देवताओं ने किया तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट जब उसका रियल प्रोसेस समझने जाओ तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स और उस चीज को आपका ब्रेन कई बार नहीं समझ पाता। तो उसी तरीके से होता है लैंडिंग पेज के अंदर कि अगर अगर मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना दूं कि 7 हैक्स टू इंप्रूव योर कन्वर्जन बाय 30%, तो उसमें हो सकता है चांसेस ज्यादा है कि लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। या फिर एक छोटी सी रील बना दूं जो आजकल लोग करते हैं कि एक टिप दे दो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एफर्ट या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए। बट द प्रॉब्लम इज कि रियलिटी डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर आप सोचे तो यूनिवर्स जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, एंड अगर आप उसमें कोई भी एक चीज चेंज करते हो देन ऑल अदर थिंग्स विल चेंज इटसेल्फ, मतलब हर चीज में चेंज होगा बिकॉज वी आर ऑल इंटर रिलेटेड। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में शायद सुना होगा। बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि अगर अमेरिका में कोई बटरफ्लाई जो है उनकी पंख जो उनका घूमा उसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया के किसी समुद्र में बाढ़ आए। अभी उन दोनों के बीच का रिलेशन देयर इज साइंटिफिकली पॉसिबल कि आप दिखा सकते हो। वैसे ही लैंडिंग पेज के अंदर भी काफी बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सो यू माइट गेट बोर्ड, आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज काफी चीजें ऐसी होती है जो शायद इतने इंटरेस्टिंग नहीं होती समझना बट इंपॉर्टेंट होती है। तो आई सजेस्ट यू गाइस प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन देने का कोशिश करो and try to understand. And one more thing, try to keep notes of all this because आज मैं भी notes के साथ ही कुछ present कर रहा हूँ because हमारे ब्रेन, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी सिंगल ह्यूमन कि वो सारी चीजें वो समझ पाई। अगर वो इवन मैं समझता भी हूँ पर वो मुझे सारी चीजें याद रख के बिना भूले सारी चीजें करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको भी whenever you want to use this kind of thing जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, you have to use checklist. For example, अगर जो पायलट्स होते हैं, पायलट्स एंड डॉक्टर्स, दे आर कंसिडर कि उनका जो काम है दैट इज मोस्ट ट्रिकी एंड सबसे ज्यादा उनके स्टेक्स हाई होते हैं। अगर डॉक्टर्स की बात करो, अगर उनकी एक गलती से किसी की जान जा सकती है, सेम विद पायलट्स। तो वो दोनों फील्ड में जो है चेकलिस्ट आर मैंडेटरी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप भी कुछ लिख रहे हो एंड यू आर मेकिंग श्योर कि यू हैव द चेकलिस्ट व्हेनेवर यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज एंड ऑल। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड ऑल। अगर कोई भी कमेंट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एट लास्ट एंड नाउ विल स्टार्ट विद इट। सो आई होप कि दैट इज नंबर वन थिंग कि प्लीज टेक नोट्स, बिकॉज काफी बार ये होगा कि 4 चीजें हैं, अगर आप नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम ये होगी कि आपने अभी आपको लगेगा कि हाँ मैं समझ गया, बट जब यूज करने जाओगे यू विल मिस एटलीस्ट 1 or 2। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग नोट्स। सो नाउ सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंडिंग पेज, व्हाट इज लैंडिंग पेज इन टर्म्स ऑफ, क्या आप बेसिक इसका चीज समझते हो? काफी लोगों को उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। डू यू रियली नो जितने भी लैंडिंग पेजेस है आपके, डू यू हैव एक्चुअल आइडिया कि व्हाट इज द इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ योर लैंडिंग पेज? क्या आपको पता है कि व्हाट इज द एक्चुअल इकोनॉमिकल वैल्यू, की एक्चुअली वो कितना प्रोड्यूस करके आपको दे सकता है? आर यू ट्रीटिंग दैट लैंडिंग पेज एज एन एसेट? क्या आप उसको सच में, आपको उस चीज का पर्सपेक्टिव है, उस चीज का एक रफ आइडिया है? That is something you need to understand whenever you're dealing with landing page or any kind of this thing. So you have to make sure कि आप जब भी कभी किसी भी लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हो या किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, you have to have a rough idea कि उसका इकोनॉमिकल वैल्यू कितना है in terms of real world. For example, अगर वॉरेन बफेट, if whenever he invest in any company, he thinks कि अगले 50 साल में वो कितना कमा के देगी, and then he put his efforts की उसमें उसको कितना एफर्ट्स डालना चाहिए। उसी तरीके से व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग अ लैंडिंग पेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू, आप उसमें से कितना निकाल पाओगे, एंड देन यू हैव टू कंसीडर कि कितना थॉट्स एंड एफर्ट्स डालना। बिकॉज इवन आफ्टर लर्निंग कि आप सब कुछ चीजें सीख लोगे कि लैंडिंग पेज को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना,
द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ ह्यूमंस इज कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम ऑन द प्लैनेट अर्थ। हमारा करियर जो है दैट इज अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो यू विल नेवर, आप कभी भी सारी चीजों को उतना फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू लर्न टू हाउ टू प्रायोरिटाइज। सो उसके लिए दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि आप जिस भी लैंडिंग पेज पे काम कर रहे हो उसका इकोनॉमिकल वैल्यू कितना है। देन सेकेंड थिंग कि क्या आप जो है अपने कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख सकते हो। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर, आर यू रियली एबल टू सी, क्या आप उनको आपको क्या कैन यू एबल टू फील द पेन, मतलब वो जो पेन में जैसे जा रहे हैं क्या आप उस चीज को फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर देर आर लॉट ऑफ लार्ज कंपनीज हु आर सेलिंग व्हील चेयर्स, उनके काफी ऐसी कंपनीज की स्टोरीज आपको मिल जाएगी जहां पे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था हु वर ऑन द व्हील चेयर, और उनकी कंपनीज वर स्ट्रगलिंग, बट वंस दे हैड, जब उन्होंने एक ऐसा इंसान अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लाया जो खुद लाइफ में ऐसी सिचुएशन में है हु नीड टू यूज व्हील चेयर, उसके बाद उनका सेल्स भी बढ़ा। वन ऑफ द रीजंस इज कि वो बंदे को पता है कि व्हाट आर द पेन्स, व्हाट आर द लिटिल पेन्स दे गो थ्रू। सो डू यू थिंक कि आर यू रियली एबल टू go through and understand the pain people are going through? So this is something you need to understand कि ये जो चीज है that is also very very important। ये दोनों चीजें थी from a prospective point of view। Now डू यू नो कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपके वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर कोई चीज वर्क कर रही है और कोई चीज वर्क नहीं कर रही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। लाइक आई हैव रेड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक मास्टर और एक अमेच्योर में क्या फर्क होता है। दुनिया में अगर आप जाओगे तो आपको सारे कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ लोग विच आर नॉट प्रोफेशनल, वो भी दे हैव गुड पैकेजिंग, वो उनका मार्केटिंग अच्छा होता है, आपको लगेगा वो अच्छे है in terms of what they do, but the real differentiator is कि जब चीजें ऐसे नहीं हो रही जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ क्रिकेट मैच और बास्केटबॉल मैच। क्रिकेट मैच का एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो कोच है, एक कोच जो है वो इस तरह से स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा है कि उसने किसी और को जीतते हुए देखा और कॉपी पेस्ट करके वो बता रहा है। द प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कि जब भी चीजें उसने सोचा वैसे नहीं होगी, ही डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या करना। बट अ रियल प्रोफेशनल नोज कि अगर चीजें गलत हुई, अगर प्रॉब्लम हुई, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ही नोज कि किस चीज को फिक्स करके रिजल्ट लाना। सो डू यू अभी क्या डू यू रियली नो, अभी क्या आपको ये आइडिया है कि अगर आपकी वेबसाइट में भी कोई प्रॉब्लम हुई या फिर आपके लैंडिंग पेज में कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो डू यू नो कि कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे उस चीज को चेंज करके यू कैन ब्रिंग द रिजल्ट बैक। so this is something we're going to learn today। then just a minute, what page element, okay, so these are the main three things that which you guys need to understand now। आज मैंने इस प्रोग्राम में अपने काफी क्लोज लोगों को बोला था कि they guys should attend and some of them are like in this particular category जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज आपको भी आइडिया आएगा कि विच आर द पीपल जिनको ये ज्यादा बेनिफिशियल करेगा। इफ यू आर अ लैंडिंग पेज डेवलपर, वेब डिजाइनर, कॉपी राइटर, यूजर एक्सपीरियंस इंजीनियर, वेब एनालिटिक्स मैनेजर, एफिलिएट मार्केटर, प्रोडक्ट मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग अगर आप हो, this the workshop, the whole class is going to benefit you in some way or another। so make sure अगर if this is part of your field, अब you pay attention कि आगे जो भी हम सीखने वाले हैं। now when come to landing page, it's not the skill, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, द ब्रेन वी हैव, उसका एक प्रॉब्लम है कि वी वांट सिंपल एक्सप्लेनेशन। बट अगर आपको सच में एक ऐसा इंसान बनना है हु नोज हाउ टू बी build a really high converting landing pages, there are few skills you need to have, few things understanding you need to have। उसमें से एक है वेब डेवलपमेंट, सेकंड इज ह्यूमन साइकोलॉजी, थर्ड इज कॉपी राइटिंग, फोर्थ इज विजुअल डिजाइन, सेवेंथ इज यूजेबिलिटी,
Sixth is team building. And last one is scientific method. आपको एटलीस्ट ये 7 चीजों का अंडरस्टैंडिंग कुछ ना हद तक तो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू, आई एम नॉट गुड एट वेब डेवलपमेंट, आई एम नॉट गुड एट विजुअल डिजाइन. ये दोनों चीजें, दिस आर माय वीकनेस पॉइंट, दिस आर माय वीक पॉइंट्स. इफ आई थिंक अबाउट माय प्लस पॉइंट्स, नाउ इट्स कॉपी राइटिंग एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रोसेस. नाउ दिस आर माय प्लस पॉइंट्स. तो ऐसा नहीं होगा कि it will take you at least like 5-10 years to learn all the skills and basically master it, but at least आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर आपको अपना skills जो है वो राउंड अराउंड पूरा improve करना है, तो you need all this skills. तब जाके आप अपने conversion rates को बहुत ही dramatically improve कर पाओगे. बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से अगर आप में से एक, इसमें से एक भी स्किल पे अगर आप जीरो हो, द प्रॉब्लम इज कि दिस ऑल स्किल्स मल्टीप्लाई टुगेदर. लेट्स से कि अगर हर स्किल का एक वैल्यू दे दे, लेट्स डिफाइन वैल्यू एज 10. अगर हर स्किल में अगर आप 10 और 1 to 10 स्केल, लेट्स से कि यू आर इन वेब डेवलपमेंट, आई एम एट 1. अगर ह्यूमन साइकोलॉजी, लेट्स से 9. सो द थिंग इज कि इट ऑल मल्टीप्लाई. द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इसमें से एक भी चीज में जीरो हो, व्हाट विल हैपन इज कि किसी भी चीज को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज जीरो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीजों में ग्रेजुअली यू आर ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग. और धीरे धीरे यू हैव कुछ, इसमें से आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होगी, कुछ वीकनेसेस होंगी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट यू नो एवरीथिंग और बेसिक फंडामेंटल हर चीज का पता है. नाउ तो आई होप कि यू गॉट द आइडिया कि क्या है. ये सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव. Now some skills you need to have कि जो specific skills है in terms of कि how motivation works. For example, आपको ये पता होना चाहिए कि if I ask any one of you what is the difference between internal motivation and external motivation, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है. Second thing, you need to have some understanding कि how brain works, कि न्यूरोसाइंस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आंखों के अंदर ब्लू लाइट जा रही है, they have a certain effect on your brain versus अगर मेरे आंखों में येलो लाइट जा रही है. so both are making an impact. even अगर आप किसी पेज को डिजाइन कर रहे हो, वहां पे let's say कि if you are selling certain product, let's say sleep related product, and if you have a blue thing, there is a higher chance कि वो पेज convert कम करेगा compared to other colors, because कहीं ना कहीं that is what we link subconsciously. तो you need to understand कि neuroscience का understanding आपको हो. थर्ड इज सोशल साइकोलॉजी. फिर आ गया कुछ हार्डकोर स्किल्स, मतलब के फेसबुक पिक्सेल्स, बेसिकली वेब एनालिटिक्स. कि अगर आप एक बार आपने कैंपेन चालू किया, आपने लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक आना चालू किया, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उस जो डेटा आ रहा है उसको एनालाइज करो. तो एनालिसिस का एक स्किल यू नीड टू हैव. These are few things which will help you. अगर इस सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा अगर भी आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो then you can be a good landing page designer. And basically what will happen, अगर ये सातों skills आप में है, तो you will not just be a good landing page designer. Overall आप एक, you will be a good marketing person. Because I'll tell you, the people जो लोगों ने, you can find there are few people like Tim Ash, there is another guy जिसका नाम मैं भूल गया. There are all I think 4 people in the world who have done specifically PhD in the subject of landing page optimization. उन्होंने PhD करी है. And at the core, they are all basically marketing people. They are not just a landing page designer or some UX UA designer. Basically, आपको marketing का core understanding होना जरूरी है. So now these are the basic fundamentals. I hope you guys understand कि multiple चीजें हैं. So you cannot rely on one thing only. आपको multiple चीजों का understanding होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Now I'll try, मुझे नहीं पता कि सारी चीजों में एक्चुअली कितना टाइम लगता है, बट I'll try कि बेसिकली जितना हो सके उतना कवर करूंगा. एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ प्रॉमिस कि आज जितना भी सीखेंगे, इफ यू यूज इट, एटलीस्ट आपका कन्वर्जन रेट 20-30% तो इंप्रूव होना चाहिए. दैट्स अ मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग इफ यू इम्प्लीमेंट.
एंड विथ माई टीम मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप में से अटेंड करने वाले कुछ लोगों में से मेरी खुद की टीम है, उनको तो मैंने इस हद तक बोला है कि इफ यू दे अटेंड द होल प्रोग्राम एंड यूज व्हाट दे लर्न इन अ नेक्स्ट वीक, तो आज का पूरा दिन जो प्रोग्राम, आज संडे है तो दे कैन होल डे ऑफ, मतलब कि वो पूरा उनका कंपनसेट हो जाएगा, वो वर्किंग आवर्स काउंट होगा। द रीजन वाज सिंपल कि मुझे पता है कि इफ दे लर्न एंड इम्प्लीमेंट, उनका एफिशिएंसी विल ग्रो एटलीस्ट 20-30%। सो जो एक्स्ट्रा मैं उनको वर्क जो टाइम दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम लीव दे रहा हूँ, वो भी एफिशिएंटली स्पेंड हो जाएगा इफ दे आर स्टार्टिंग यूजिंग इट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज लैंडिंग पेज? व्हेन आई से लैंडिंग पेज, व्हाट just if you have a like if you know what is the how you define landing page, please let me know in chat कि आप लैंडिंग पेज को किस तरीके से डिफाइन करोगे। Okay, landing page is a digital store, we can sell a virtual salesman. Yeah, it's good definitions. Okay, so if you think about a technical definition which are accepted by everybody, you can define, अगर हर इंसान अपने हिसाब से define थोड़ा different कर सकता है, but let's go with the practical definition which is used for landing pages. It's a web page designed to get one objective done. The only thing which differentiates a website between landing pages, इसकी जो landing page है that is more focused, you want कि वो एक ही action ले और वो आपको पता है कि क्या action you want कि वो इंसान ले. So that is what we can as a sell basically a definition. तो whenever you thinking about landing page, आपको ये सोचना है कि उस बंदे से आपको सिर्फ एक ही action वो ले, वो you want. When you think about website is a multifaceted thing, वहाँ पे multiple चीजें हो सकती है. But when you think about landing pages, there is only one thing. Now, you have to understand कि अगर आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम इज कि दिस इज व्हाट आई हैव सीन ओवर एंड ओवर. मैंने काफी बार देखा है, मैंने काफी ट्रेनर्स के साथ अब तो काम किया है. I have done work with some other people. The big thing is कि lot of people pay attention, lot of attention to marketing. मतलब कि they are bringing traffic. They are spending lots and lots of money. For example, I have seen, I work with people जो महीने का 10 लाख रुपए भी spend कर रहे हैं ट्रैफिक को लाने के लिए. And they are also spending a lot of money to convert after, like जो already customers है उनको future में convert करने के लिए on email marketing or things like that on a retention. I have seen them spending a lot of money, even up to 10 lakh. But वही जगह पे मैं जाके देखता हूँ, when I see their team and all, they when comes to landing page specifically, it could be landing pages जहाँ से conversion actually हो रहा है. Conversion. I have seen कि वहाँ पे शायद एक आध इंसान होता है, there is one person who is actually doing it और वो भी focus से नहीं कर रहा है. It is not just about landing page. Think about any person. I have few example. मैं कुछ लोगों के साथ काम करता हूँ who are into training field. Now to bring the traffic in, they are spending a lot of money. उसके बाद वो कन्वर्ट होने के बाद रिटेन करने के लिए ईमेल मार्केटिंग उनकी टीम काफी एफर्ट्स कर रही है. बट द थिंग इज कि जिस प्लेस पे वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उनका खुद का कन्वर्जन रेट, वहां पे शायद सबसे कम एफर्ट्स जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी स्पेंड. आई बेट ऑन इट, अगर वो स्पेशली इफ समबडी इज इन ट्रेनिंग फील्ड,
अगर कोई इंसान है वो ट्रेनिंग फील्ड में है एंड ही इज गेटिंग लेट्स से कि 10% कन्वर्जन रेट टाइम बाय टाइम, वो बंदा अगर खुद पे काम करे एंड ही इम्प्रूव द सेल्स पिच और वहां से 15 भी कर सके, द थिंग इज कि दैट इज द बिगेस्ट मनी यू एवर गोइंग टू गेट। इन सेम वे लैंडिंग पेज भी सेम तरीके से ही काम करता है कि यू कैन ब्रिंग द ट्रैफिक नो मैटर व्हाट, बट अगर आपका लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, द प्रॉब्लम इज कि यू आर नेवर एबल टू मेक द मनी यू वांट, बिकॉज आप ट्रैफिक तो ला रहे हो पर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। So this is something you guys need to understand. और अल्टीमेटली इफ यू देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैंने देखा है कि दे से कि मेरा लैंडिंग पेज तो अच्छा है बट कन्वर्ट नहीं हो रहा। द थिंग इज कि द रियल पर्सन हु इज गोइंग टू जज कि आपका लैंडिंग पेज सच में अच्छा है कि नहीं है, दैट इज द विजिटर। अगर कन्वर्जन रेट इज गुड या पेज इज गुड, अगर कन्वर्जन रेट बुरा है देन योर पेज इज बैड। सिंपल सा डेफिनेशन है, द पेज इज देयर टू मेक अ सेल, या फिर जो भी आपका इंटेंडेड एक्शन है यू वांट देम टू टेक, दे विल डू इट, अदरवाइज इट्स, अगर वो एक्शंस नहीं ले रहे देन योर पेज इज बैड। उसमें नो मैटर वो कितना अच्छा दिखता है, द पेज लैंडिंग पेज, वहां पे जो लैंडिंग पेज है वो अच्छा दिखने के लिए नहीं है। लैंडिंग पेज एक पर्पस के साथ होता है, अगर वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा है तो पेज इज बैड। नाउ why I'm saying कि visitors are the most important, because अगर visitor for example आ रहे हैं और वो convert नहीं हो रहा है, then you know कि आपको actual पता चल रहा है कि real life में क्या work करता है। If you think about it, तीन चीजें हैं which makes a website और landing page a good testing ground। Basically आप जितनी चीजें को टेस्ट करना चाहते हैं you can test it। उसका तीन सबसे बड़ी biggest reason is कि सबसे पहले तो ट्रैफिक काफी हाई ला सकते हो आप, हाई ट्रैफिक। देन अगर आपको लैंडिंग पेज पे कोई भी चेंजेस करने हैं, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, टेक्नोलॉजी का टाइम, हो सकता है कि अभी आपने चेंज किया और 2 मिनट के बाद वो चेंज लाइव हो चुका है, तो इजीली चेंजेबल। और तीसरा है कि ट्रैकिंग टूल्स जो है आजकल, विच आर वेरी एक्यूरेट नाउडेज। तो उससे क्या हो रहा है कि ये तीन चीजों की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यू हैव अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कि आपको पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग अगर आपके पेज पे आए, उसमें से सर्टेन अमाउंट कन्वर्ट हुए एक हेडलाइन देखकर और सर्टेन अमाउंट कन्वर्ट हुआ दूसरी हेडलाइन देखकर, देन यू नो कि क्या लोगों को ज्यादा अपील कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो दिस 3 थिंग्स मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। और प्लस कि यू हैव अ गुड, आजकल के अगर इफ यू हैव सम पेड टूल्स, तो टूल्स आर वेरी एक्यूरेट जो आपको बताते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस सिचुएशन में क्या किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देयर आर टूल्स विच आर हीट मैपिंग कि आपके वेब पेज पे कहाँ पे लोग जा रहे हैं, उनकी माउस कहाँ पे घूम रहा है। देयर आर सम आई ट्रैकिंग टूल्स विच इज नॉट वायबल फॉर मोस्ट पीपल, बट हीट मैप इज समथिंग वायबल। उसके अलावा देयर इज अ टूल्स जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट पे आके पूरा जो सेशन होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो सेशन को आप देख सकते हैं कि वो कहाँ आ रहा है, कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ से वो मूव कर रहा है। तो यू नो द होल जर्नी कि कस्टमर किस तरीके से आ रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द होल लैंडिंग पेज सिनेरियो इन अ बिग कॉन्टेक्स्ट कि कहाँ पे वो चीज फिट होती है। सो सबसे पहले तो if you think about marketing or of any kind, I just want to share my screen for a minute. Just give me a second and I'll share my screen. Okay, I hope you are able to see the screen now. Yeah. तो मैंने बहुत कोशिश की थी अच्छी पीपीटी बनाने की, which I'm not able to make, so I'm just showing few slides जो अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा है। So basically that is how the whole marketing funnel works। दुनिया में किसी भी कंपनी में जाओ चीजें ऐसे ही वर्क करती है। नंबर 1, at top you have suspects, ऐसे लोग जो जानते हैं नहीं है आप लोगों को, then you acquire them, acquisition होता है, then you convert them, conversion होता है, and then leads and customers जो बनते हैं,
you have a retention, you have to retain them. So that is how it works. Retention के बाद that they become a repeat customers. तो यही प्रोसेस रहता है in every business in the world. सिंपल सा प्रोसेस है कि first you acquire a customer, first you acquire the customer, then वो convert होता है. Basically if you think about hot, cold and warm leads, सबसे पहले जो before acquisition stage होता है, that at that time people are cold leads. Then you convert them. Then basically if you get a lead, they become warmer, and then at least when they buy they become a hot lead, and once they buy they become a hot lead itself. So that is simply basically acquire करते हैं नए customers को, retain करते हैं, convert करते हैं. That's the whole process works. Now यही चीज होती है हर जगह पे किसी भी बिजनेस के अंदर. You acquire a customer, you convert a customer, and you retain a customer, simply. So next thing is there are a lot of methods we use when it comes to getting the traffic on a page we have. Number one thing we have to understand कि सबसे पहले we have to understand कि traffic sources जो भी है हमारे लिए, you can never create a good landing page अगर आपको नहीं पता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है. बिकॉज जो ट्रैफिक होता है, जिस जगह से ट्रैफिक हो सकता है, फेसबुक एड से आ रहा है, ऑर्गेनिक फेसबुक से आ रहा है, या फिर गूगल से आ रहा है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रैफिक सोर्स है, यू नीड टू हैव एटलीस्ट सम कंट्रोल ऑन द ट्रैफिक सोर्सेज. आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक एक्चुअली आ कहाँ से रहा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ से ट्रैफिक आ सकता है, बट बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है, लेट्स से कि यू आर रनिंग एड्स फ्रॉम फेसबुक एंड गूगल. ओके, नाउ अगर आप ये दोनों प्लेटफॉर्म को समझो, एट कोर फेसबुक इज ड्रिवन बाय बिहेवियर. अगर आप फेसबुक पे अगर कोई भी इंसान को जाके पूछो, फेसबुक पे कोई प्रोडक्टिव काम करने नहीं जा रहा है, कोई इंटेंट लेकर नहीं जा रहा है. फेसबुक पर पीपल यूजुअली गो फॉर टाइम पास, जस्ट स्क्रॉल डाउन. ओके, सेम विथ इंस्टाग्राम, सेम विथ यू हैव टू, इवन फ्यूचर में हो सकता है कि देयर आर न्यू प्लेटफॉर्म्स. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाई पीपल आर गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. अगर एक बार आपने समझ गया कि वो जा रहे हैं किसी इंटेंट को लेकर, देन यू से दैट्स अ इंटेंट ड्रिवन. अगर वो जा रहे हैं किसी बिहेवियर की वजह से, फॉर एग्जांपल दे फील बोर्ड एंड दे आर गोइंग जस्ट टू स्क्रॉल, तो देन इट्स अ बिहेवियर ड्रिवन. सो आपके जितने भी ट्रैफिक हो सकते हैं, ट्रैफिक सोर्सेज, फॉर इवन एग्जांपल ईमेल, आपको ये समझना पड़ेगा कि ईमेल मार्केटिंग में there are specific type of subject line which could be intent driven, and there are specific subject lines that can be behavior driven. तो हमने देखा है there are a lot of people, अगर आपके ईमेल लिस्ट में कोई ऐसा इंसान है जो शायद हर ईमेल ओपन कर रहा है, he is treating email as a Facebook, और ऐसा कोई इंसान है he is opening like 40-50% email, he might be using emails as a Google. Basically उसको कुछ काम है इसलिए जा रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स कि आपको वो चीज अपने ऑडियंस के हिसाब से कस्टमाइज समझनी पड़ेगी कि आपकी जो भी ऑडियंस है वो किस रीजन से जा रही है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ महीने पहले मेरे साथ ये हुआ था कि जिस तरह से मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, मैं ईमेल भी ओपन कर देता था. नाउ अगर मैं गया हूँ, किसी की सब्जेक्ट लाइन अच्छी दिख गई तो शायद क्लिक कर दिया, या फिर ऐसा भी होता था कि पहली 5 तो बिना देखे भी क्लिक करके आई विल ओपन द ईमेल. इसका मतलब ये नहीं था कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, इट वॉज सिंपली मीन्स कि मैं अपने बिहेवियर की वजह से जा रहा. उसी तरीके से आपका जितने भी ट्रैफिक सोर्सेज है, इट कुड बी के बैनर एड्स, सोशल मीडिया जितने भी साइट्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ईमेल्स, खुद का ईमेल लिस्ट हो गया, दूसरों का ईमेल लिस्ट हो गया, और यू आर डूइंग थ्रू ब्लॉग्स. So you have to understand कि जो भी लोग आ रहे हैं वो वहां पे क्यों आए थे and what is their intention, और उसी हिसाब से, because होगा क्या कि अगर specifically let's say कि कोई intent driven इंसान है, उसके लिए लैंडिंग पेज जो है that should be very differently designed. और अगर कोई different traffic sources से आ रहा है तो आपको वो differentiate करना पड़ेगा, otherwise अच्छा लैंडिंग पेज भी कभी convert नहीं कर सकता. You are never able to relate with the person you are talking to. तो अंडरस्टैंड, सबसे पहली कि अंडरस्टैंड व्हाई पीपल, अंडरस्टैंड
ट्रैफिक सोर्सेज। जितने भी आप लोगों को ला रहे हो अपने लैंडिंग पेज पे, आपको 95% लोगों का पता होना चाहिए कि वो लोग क्यों आ रहे हैं, व्हाई पीपल आर कमिंग ऑन द लैंडिंग पेज। आई हैव सीन फ्यू पीपल डू दिस कि दे उन्होंने अपने लैंडिंग पेज के बिफोर, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर साइट है, लेट्स से मेरी साइट है kauminpatel.com। अगर मैं इस साइट को ओपन होने से पहले कैप्चा का जो आता है सिक्योरिटी चेक वो रख दूं, उससे क्या होगा कि देयर इज लेस चांस कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कम ऑन अ वेबसाइट। बट उससे फायदा ये होता है, जो वेबसाइट ओनर है उसको ये फायदा होता है कि जो ट्रैफिक आएगा दे नो कि देयर इज मोर इंटरेस्टेड ट्रैफिक। उसी तरीके से कई बार क्या होता है, देयर आर पीपल हु जस्ट क्लिक ऑन योर साइट, वो क्लिक करते हैं और चले जाते हैं, दे जस्ट बाउंस ऑफ बिकॉज उनको इंटरेस्ट भी नहीं था, उन्होंने जस्ट गलती से क्लिक कर दिया। व्हेन यू क्रिएट रेजिस्टेंस, तो होता क्या है कि आप जो वेबसाइट है वहां पे लोग आ रहे हैं, तो यू नो द ट्रैफिक क्वालिटी इज बेटर। सो इन द सेम वे, अब जितने भी सोर्सेस से अपने लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक ला रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि वो ट्रैफिक सोर्सेज अगर आपको नहीं पता, देन व्हाट विल हैपन इन लॉन्ग रन कि आप अपने पेज पे कुछ ऑप्टिमाइज कर रहे हो और हो सकता है कि लेट्स से कि दिस कुड बी अ ब्रेकडाउन फॉर योर ट्रैफिक। लेट्स से 50% आ रहे हैं फेसबुक से, 30% लोग आ रहे हैं गूगल से, 20% आ रहे हैं ईमेल से। नाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी ये जो तीनों, लेट्स से कि फेसबुक एड्स जो कर रहे हैं, गूगल एड्स कर रहे हैं और ईमेल्स कर रहे हैं, तीनों हो सकता है कि डिफरेंट लोग कर रहे हो। नाउ दे माइट बी रनिंग वेरी डिफरेंट कैंपेन्स, उनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। प्रॉब्लम इज कि यू आर लैंडिंग देम ऑन द सेम लैंडिंग पेज। तो द प्रॉब्लम इज कि ये शायद हो सकता है कि तीनों डिफरेंट माइंडसेट लेकर आपके पेज पर आए और द वे दे रिएक्ट टू योर लैंडिंग पेज विल बी वेरी डिफरेंट, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा। तो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि आप बिना ट्रैफिक सोर्सेस को समझे यू आर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कन्वर्जन को बढ़ाए। तो दिस इज द नंबर वन थिंग, अंडरस्टैंड योर ट्रैफिक सोर्स कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन दे हैव, व्हिच हम जो आगे बात करेंगे कि स्पेसिफिकली आप किस तरीके से डिजाइन करो। बट अंडरस्टैंड ट्रैफिक सोर्सेज, मैं ज्यादा इस चीज को एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग राइट, बट अगर ट्रैफिक सोर्स आपको नहीं पता है कि क्यों आ रहे, कैसे लोग आ रहे हैं, देयर इज हायर चांस कि आपका लैंडिंग पेज शायद वो फ्यूचर में उतना कन्वर्जन दे ही नहीं पाएगा जितना आप चाहते हो। तो दिस इज नंबर वन थिंग, ट्रैफिक सोर्स। So this is something, it's very important. Okay, so अभी तक हमने क्या किया, we understood कि what is the definition of landing page. Whenever we say landing page, we have one objective in our mind. Why? क्यों? मैं सबसे पहले बता दूं, डेफिनेशंस आपके हिसाब से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मैं क्यों चीजों को डिफाइन कर रहा हूँ, बिकॉज हर वर्ड का सभी को एक ऑन अ कॉमन ग्राउंड वी हैव टू बी, तो हम सारी चीजों को इजीली समझ पाए। नंबर वन थिंग इज नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट कन्वर्जन मीन्स। So please let me know what do you think about conversion, कि आपको क्या लगता है, what do you mean by conversion? अगर आप conversion बोलते हो, what is conversion for you? You can type in chat what is conversion for you. अगर आप किसी if our objective with the landing page got fulfilled, yeah, almost accurate, yeah. If our objective with the landing page got fulfilled, then it's a conversion, right? Quite accurate. So let
I'll define a little broader. Ki when I say a conversion, basically means a visitor takes a desired action, takes a desired action that has a measurable value to your business, that has measurable value to your business. This is something it's very important कि जो भी actions वो ले, अगर आपने you want कि वो लोग आपकी कोई ई बुक ले, then even if you are let's say कि अगर आप उनका ट्रैफिक ला रहे हो फेसबुक से and you know कि आप लॉस कर रहे हो, but as long as you know कि हर 10 में से एक इंसान फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है and you have the maths ready, आपको पता है आपने कैलकुलेशंस कर रहे हैं, then you can say it's conversion. Okay, so basically important thing is कि measurable जो value है that should be defined very precisely. You have to have the number कि हाँ आपका per lead आपका वैल्यू कितना है per lead. मैंने काफी बिजनेसेस में देखा है और पिछले एक साल पहले जस्ट अ मिनट तो एक साल पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी इस चीज को उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था. सो this is something you need to understand कि it has to be measurable. Now the thing is कि it should happen before time, मतलब कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा before running an campaign, define before running an campaign. Second thing, must be trackable. And its value should be clear. Should be clear. So you have to know कि आप जो भी intended actions है उन्होंने लिया तो सही, let's say कि उन्होंने ले भी लिया, but उसका value आपके business के लिए क्या है, you have to have that defined precisely. अगर आपके पास ये value नहीं है, the problem is कि you will never, let's say कि अगर आपकी lead, you are running a lead campaign, okay, let's say एक मिनट, just a minute. Let's say कि you are running a campaign with to generate leads, okay. अभी आपको एक एस्टिमेट है कि ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर अगर उस लीड्स जितनी भी लीड्स आएगी उसमें से 10% लीड विल गेट कन्वर्टेड, ओके, 10% कन्वर्ट हो जाएगी. सो एंड लेट्स से कि आपका जो कन्वर्जन में जो वैल्यू है पर पर्सन दैट इज लाइक 5,000 रुपीज, ओके. सो लेट्स अभी ये अज्यूम करते हैं कि 1000 लोग आए और उसमें से आपको पता है कि 100 लोग 5,000 का प्रोडक्ट लेंगे, तो दैट विल बी 5 लाख रुपीज. ये आपने कैलकुलेशंस रखा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको नाउ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड फॉर लीड. तभी अगर आपको पता है कि 5 लाख इज द मैक्सिमम रेवेन्यू यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द लीड्स, तो लेट्स से कि उसके बाद आपका जो बिजनेस में कैलकुलेशन मेक सेंस. और इफ यू वांट टू लूज मनी अप फ्रंट, बट एटलीस्ट यू हैव अ कैलकुलेशन. लेट्स से कि 5 लाख जो है वो मुझे चाहिए 1000 लीड्स में से मुझे 5 लाख का बिजनेस मिलेगा. अभी लेट्स से यू आर विलिंग टू स्पेंड 20 रुपीज पर लीड, तो 1000 लीड्स लाने के लिए यू हैव टू स्पेंड 20,000 रुपीज. इन अ सेम वे you have to define it. I am not saying कि exact numbers, आपको अपने business में अपने calculations के हिसाब से you need to know numbers कि क्या है, but it should be defined before the time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके already 1000 leads आ गए उसके बाद you are deciding कि कितना हो रहा है. It should be defined before you start even the press the campaign on. आप किसी भी कैंपेन को चालू करने से पहले you need to understand कि आपके actually जो भी actions है, desired action, उसका क्या value आ रहा है. Only then you are able to scale anything profitably, even on landing pages.
लैंडिंग पेज पे हो सकता है कि फ्यूचर में यू माइट रन लीड एड्स, यू माइट रन अ डायरेक्ट परचेज एड्स। हो सकता है कि आप ऐसी एड्स रन कर रहे हो वहां पे विच आर फॉर डाउनलोड्स, फॉर एग्जांपल ई बुक डाउनलोड्स का हो गया। सो देयर आर लॉट ऑफ कैंपेन यू कैन रन, बट एट लॉन्ग एज की यू नो द नंबर्स, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नंबर्स नहीं पता है देन यू विल बी स्क्रूड अप। सो नंबर्स इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन यू से कन्वर्जन्स, राइट, लाइक अब तक तो शायद जो जितनी भी बातें करी मोस्ट पीपल नो अबाउट दिस। देयर आर अनदर थिंग व्हिच मोस्ट पीपल डोंट, उसका देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ माइक्रो कन्वर्जन and there's something called as a macro conversion. Please let me know in chat if you know anything about micro conversions or macro conversions. So if please let me know in chat if you know anything about micro conversion or macro conversion. Just give me a minute. Okay, so first let's talk about macro conversions. Basically macro conversion is the same as कि आप जो actions लोगों से दिलवाना चाहते हो, they are taking that action. For example, sale, sign up, या फिर lead form उन्होंने completely fill किया. That's the action you want them to take, which you guys know already. That's a macro. But there's something called the micro conversions. What is micro conversions? Micro conversion could mean कि वो आपके पेज पे, लेट्स से कि यू हैव मल्टी पेज वेबसाइट व्हिच देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, जहाँ पे आप पहले पेज पे यू क्लिक एंड यू गो ऑन अ सेकंड पेज एंड वहां पे आपको लीड फॉर्म या ऐसा कुछ मिलता है. In a same way they it could be they you are taking you don't have any information on the page, you just press a download button और कुछ डाउनलोड हो जाता है. there are a lot of actions जो आपको यहाँ पे लीड या फिर ऐसा कोई डेटा नहीं मिलेगा, but you want people to take it. In a there are अगर if you think about trainers, they call it something as soft close. जैसा हमने लास्ट टाइम अगर लाइव कॉल में कोई था, वी टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंस. उसमें क्या हुआ कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हेजिटेंट टू गिव देयर ईमेल्स. फॉर एग्जांपल लीड फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं. तो लेट्स से कि you have a landing page and there is a page, वहां पे आपने यहाँ पे एक फॉर्म रखा है एंड दिस इज अ बटन. ओके, यहाँ पे आपने नाम, नंबर और ईमेल मांगा है for whatever reason. Now the problem is there are a lot of people who are not willing to do that. काफी लोगों को ये नहीं करना है. तो what you could do instead is that कि आप ऐसा कोई डिफाइन कर सकते हो कि they have to scroll through, उनको नीचे जाना चाहिए. There are a lot of theories, इसमें काफी ज्यादा contradictions है when comes to internet. मैंने काफी लोगों को देखा है कि you should have lot of things above the fold. above the fold मतलब के पहली जो स्क्रीन दिखे वहां पे बाय नाउ का बटन हो जाना चाहिए. Now if you think about any phone, just give me a minute. uh,
Now if you can see the screen right now, basically I'm not sure, basically what you can do, go on any landing page, किसी भी landing page पे जाओ and check it. The thing is कि they have above the fold, जितना यहाँ पे दिख रहा है, that is called above the fold. There are a lot of people who says, who teaches कि you should have a lot of data, मतलब कि you should have your button, जो भी conversion you want them to take, you should have directly there. There is a particular reason कि उसका I don't prefer it, and I suggest you guys should test it if you are running specially ads to people who don't know you. Let's say कि there's a page, okay, that's a first fold, वहां पे आपने कुछ इंटरेस्टिंग सा लिखा. नाउ यहाँ पे से योर गोल शुड बी कि नॉट ऑन द क्लिक, अगर आपने क्लिक है ही नहीं यहाँ पे, इंस्टेड व्हाट यू डू इज कि दे हैव टू स्क्रॉल डाउन, बट you mention something interesting here, so they are scrolling in the chat. Okay, the thing is कि scroll करना, that is a micro conversion. If you have learned last, जो हमने बात कर दी principle of consistency, what happens is, even जो अगर कोई टेलीकॉलर है, हम उनको बोलते हैं, काफी सेल्स पिच में, सेल्स ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि you have to get the people to say yes to you before conversion. Even जो public speakers होते हैं, they call it a soft close. They try and they ask people कि how many of you want to transform your life and all. They ask you certain questions. वो लोग कुछ पूछते हैं, when they know कि हाँ there are a lot of people interested in doing those things, then and then only pitch. जो अच्छे public speakers है, they know the audience जब ready है तब वो pitch करते हैं. उसी तरीके से micro conversion could be scrolling up. Now हुआ क्या कि जितने लोगों ने यहाँ से लीव कर दिया, they were not interested, और वो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं, आपका पेज उतना इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाया. So what you can do, you just go a little scroll down and यहाँ पे शायद रख सकते थे. In the same way you have to understand कि ऐसे लोग जो आपके वेबसाइट पे आके एक्शंस नहीं ले रहे, so then you have to figure out कि how you can set up a micro commitments in a way कि वो लोग एक्शंस लेना शुरू करें. One of the best ways is कि you can, हमने देखा था कि क्विज के टाइम पे लास्ट टाइम जो हमने सीखा था कि when you set up a quiz funnel, एक certain way में अगर आप अपना क्विज funnel बनाते हो, there is a higher chance that people will convert. बेसिकली माइक्रो एंड मैक्रो जो कन्वर्जन है उसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन है कि मैक्रो कन्वर्जन में आपको शायद वो एक्शन, डिजायर्ड एक्शन ले लेगा. माइक्रो कन्वर्जन में दैट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन. क्योंकि लेट्स से कि अगर आपने अच्छी हेडलाइन लिखी या फिर ऊपर टॉप ऑफ द फोल्ड इज इंटरेस्टिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको सिर्फ हेडलाइन पढ़ के डायरेक्टली एक्शन नहीं लेना है, देन दे आर स्क्रोलिंग डाउन. दिस इज समथिंग, देन दे आर स्क्रोलिंग डाउन एंड रीडिंग एवरीथिंग. So that is also convert. Psychologically क्या हो रहा है कि they are converting, basically they are showing their interest. That's an action. अगर हमने देखा हो, अगर आप में से कोई लास्ट कॉल्स में था, हमने वो विजन स्प्रिंग वाला एग्जांपल लिया था जहाँ पे चश्मा जो है, लाइक दिल्ली में एक स्टडी हुई थी कि वहां पे there's a company called विजन स्प्रिंग, और वो ग्लासेस बेचते हैं नंबर्स वाले. अगर आंखों की प्रॉब्लम है, आफ्टर 50 एवरीबडी नीड्स द ग्लास. और उन्होंने देखा कि उनका कन्वर्जन रेट जो था दैट वाज अराउंड 35%. अब उन्होंने क्या किया, वहां पे सीन ऐसा हो रहा था कि वो चश्मे पहना रहे थे और फिर उन लोगों को 10 ऑप्शन दे रहे थे कि उनको जो भी चश्मे चाहिए वो ले सकते हैं. बट जब उन्होंने एक छोटा सा स्टेप चेंज किया कि व्हेन दे आस्क पीपल कि वो चश्मे इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑप्शन, उन्होंने बोला जो आपने पहने हैं वो रख सकते हैं या तो वापस कर दो, तो दे ट्रिगर्ड डिफरेंट इमोशंस. दिस माइट लुक लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग व्हेन कम्स टू माइक्रो कन्वर्जंस. छोटी सी चीज लग सकती है कि शायद आपको लगेगा कि इससे शायद क्या इंप्रूवमेंट आएगा, बट आई कैन प्रॉमिस यू, टेस्ट इट, देयर इज 25% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड विल गेट कन्वर्टेड. लेट्स से कि यू आर गेटिंग अ ट्रैफिक ऑफ 1 लाख पीपल अ मंथ, और उसमें से 10% कन्वर्जन ऑलरेडी आ रहा है. आई बेट ऑन इट, इट विल इंक्रीज टू 12.5 अगर आप 2-3 माइक्रो कन्वर्जन सेट कर सकते हो अपने वेबसाइट में. यू हैव टू थिंक कि अगर उस बंदे से किस तरीके से ज्यादा एफर्ट करवाओ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी, नॉट द एक्चुअल थिंग यू वांट. मतलब वो शायद इतना रिस्क लेने के रेडी नहीं है कि वो आपको डेटा देने को रेडी नहीं है, बट ही इज विलिंग टू गिव यू द सेम वे. you can use in a, like you can create a page. I guess there's a guy, I don't know, Guni Guru, those people are running ads. मैंने उनको देखा था, they have lead page
on first page you have to fill up your name, number and info, and when you go on a second page वहां पे उनका payment method था. It has some, like the positive is कि अगर मैं यहाँ पे आके lose भी कर गया, they know कि someone is show enough interest to give the data, but they have not paid for it. So there's a good way you can figure it out कि क्या है. Because कई बार क्या होता है कि let's say कि आपने directly paying का link रख दिया. The problem is you don't know कि कितने लोग वहां से जा रहे हैं. So this is something you have to understand. If you have anything, do you think where you can use the micro conversion in your thing? Just let me know. We can discuss about this because this is important. Micro conversion का एक और example, if you think about it, कि if you have an e-commerce store, just adding a product, not buying it. Buying की बात नहीं है. Adding a product in a cart is a micro commitment. In the same way, if you think how you are being manipulated by big companies, think about Amazon wish list. If you put things in a wish list, it means that you want to buy that in the future. That's why you put in a wish list. That's why they keep wish list. So that is a micro commitment example. Another example could be where I saw. I forgot one great example. याद आएगा तो I'll share. So these are the micro commitment examples. You have to think how you can make people committed a little bit, so that's increase the chances of them taking an action. Okay, now what is a conversion rate? How do you define conversion? आपका formula क्या है conversion rate का? For just give me idea कि अगर when you say conversion rate, let's say 10% है, तो what do you mean by conversion rate? कि उससे मुझे क्या समझ आना चाहिए, आपको क्या लगता है? Now the thing is there are a lot of people, there's little confusion which I want कि थोड़ा clear हो जाए. बाकी तो most people know simple सा formula है, conversion rate is equal to number of conversions by visitors. That's what most people believe कि conversion rate का formula यही है कि 1000 लोग आए वेबसाइट पे, उसमें से 10 मतलब let's say 100 लोग convert हुए, तो then that's a 10 divided by 1000, that's a 10% conversion rate. Okay. The thing is you cannot count visitors, you have to think about unique visitors. So in actual formula for conversion rate, that's the only difference. You have to know what is the unique thing about that. What is how many unique visitors you got? For example, you might get 1000 people on your page, but उसमें से हो सकता है कि 600 unique visitor ही है. Then अगर let's say 100 convert हुए हैं, so it's like a 100 divided by 600, not 1000. Then that's a 16% conversion rate. So it's about that only. Now I want to ask you guys, can you convert 100% of the people on your landing page? That's the number one question. And if yes or no, you can say. And what kind of visitors you are actually targeting? अगर आप landing page conversion बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो कौन से type के लोगों से बढ़ेगा? So just let me know.
Okay, so I want to share my screen again. Just give me a moment. Okay, not possible 100% conversion rate. I have something to share, Vivek sir. आपने last time एक पूछा था कि how to convert somebody else, like किसी और brand के customers को किस तरीके से convert करे. Yes, so I hope you are able to see the screen. Okay, just a minute. Yes, so you have to understand कि let's say कि आपकी website पे 1000 लोग आए, उसमें से there are people who are decided कि उनको वो चीज बाय करनी ही करनी है. They gonna buy it anyhow. आप कुछ करोगे नहीं करोगे, सिर्फ पेमेंट का लिंक रख दिया तो भी दे विल बाय. ओके, सो यू से देम यसेस. तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है. तो दैट आर नॉट द पीपल जिनके लिए आप अपना लैंडिंग पेज बना रहे हो. देन देयर आर पीपल हु आर नोज, मतलब के हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर रिसर्च करने आया हो. देयर आर पीपल हु आर नेवर गोइंग टू स्पेंड मनी. दुनिया में ऐसे लोग भी है जो शायद कभी स्पेंड ही नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या पर्टिकुलर चीज पे जो आप बेच रहे हैं. तो देयर आर लाइक नोज. देन पीपल हु आर लाइक नो मेबीज. Then like maybes. Yes maybes. So अभी जो हो रहा है ना कि मेबीज और यस मेबीज के बीच में आपका कन्वर्जन रेट आ रहा है. ओके, दैट इज योर करंट कन्वर्जन रेट. आपको अपना पेज जो है दैट यू शुड इम्प्रूव टू अ लेवल कि जो लोग शायद नेगेटिव साइड पे है उनको कन्वर्ट कर पाओ, बट हु आर ओपन टू पॉसिबिलिटी. यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट. आप 100% लोगों को तो कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट you can try to increase the conversion rate at least वो लोगों को. For example, just I'll give you example. Let's say कि you are running field. Okay, let's say you are running ads for like Dev Gadvi or Coach BSR Sneh Desai or whatever, those kind of people. Okay, now think about it. Knows ki when I say knows, he is going on everybody's platform but never buying. Like सबका landing page उस बंदे को दिख रहा है, he is never buying. That's a no guy. यस गाय मतलब कि वो शायद हर किसी का ले रहा है. आई हैव सीन फ्यू पीपल की मैंने चारों के प्रोग्राम में देखा था. तो दैट इज अ यस. तो उन दोनों के लिए कन्वर्जन रेट पेज का लॉजिक नहीं बनता बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्वर्टेड. उनको पता ही है कि उनको क्या करना है. नाउ देयर आर पीपल हु माइट से नो टू योर लैंडिंग पेज, पर शायद दूसरे के लैंडिंग पेज पे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे उसी इंडस्ट्री के लैंडिंग पेज पे सिमिलर प्रोडक्ट में. देन देयर आर पीपल यू आर लूजिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप वैसे लोगों को टारगेट कर रहे हो हु आर ओपन टू पॉसिबिलिटीज. आपका नहीं तो अगर आपके लैंडिंग पेज पे आके फ्यूचर में सेम इंडस्ट्री का किसी और का प्रोडक्ट लिया, देन इट मींस कि दैट इज योर प्रॉब्लम, योर कन्वर्जन रेट प्रॉब्लम. आपका जो लैंडिंग पेज है उसकी प्रॉब्लम है. सो बेसिकली आई होप यू गॉट द आइडिया. आई होप यू गॉट द आइडिया कि व्हाट आई वांट टू से. सिंपल सा मीनिंग है कि आप 100% नहीं कर सकते, बट आपको कन्वर्ट ऐसे लोगों को करना है हु हैव अ नेगेटिव इंक्लिनेशन, लाइक ऑन अ 1 to 10, लेट्स से कि ऑन अ 1 to 100 स्केल. ओके, ये दिस इज नोज, दिस इज यस. लेट्स से 50 मे बी 50 में है मे बी आपका लेट्स से कन्वर्जन शुड बी यहाँ पे होगा. दैट इज यस मे बी, नो मे बी, सॉरी नो मे बी, और ये यस मे बी. सो लेट्स से कि योर करंट कन्वर्जन रेट इज अराउंड यहाँ पे है. यू वांट कि ये जो एरिया में लोग रह रहे बाकी रह रहे, यू वांट कि आपका लैंड दैट इज जॉब ऑफ योर लैंडिंग पेज. आई होप यू गेट द आइडिया व्हाट आई वांट टू से कि बेसिकली नो वालों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, यस वालों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. लेट्स से कि out of 100 people coming on your landing page, this is a rough number, depend on vary करता है industry के industry, but this is just a hypothetical numbers I want to share so people get the idea, right? So number one thing, this is
लेट्स से कि 0 to 100 में लेट्स से कि 30% जो है वो नोज वाले, नोज नो, ओके, दे विल नेवर बाय, नेवर बाय। लेट्स से 70 से 100 वाले, मतलब दिस आर यसेस, ओके, दे विल ऑलवेज बाय। अब बचे, अब आप 50 पे हो, अभी जो हो रहा है कि यू आर गेटिंग पीपल हु आर बिटवीन दिस, तो ये आपका पेज शायद अभी इतना कन्वर्ट कर रहा है कि जो लोग उस 20% में से आप लाइक लेट्स से कि यू आर गेटिंग 18 15 18% पीपल हु आर लाइक यस और मे बी दे वर पॉजिटिव टुवर्ड्स यू एंड दे आर रेडी टू बाय। आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल। अगर आपका कोई ऑर्गेनिक, स्पेशली फॉर ट्रेनर्स, बिकॉज आई वर्क विद ट्रेनर्स अ लॉट, अगर मैंने पिछले काफी सालों में तो काफी काम किया है, तो आई नो फॉर श्योर जिस बंदे ने आपका 1-2 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करके यहाँ पे आया है, ही इज ए यस मे बी, बट जो बंदा डायरेक्टली एड से आ रहा है, दैट्स नो मे बी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका लैंडिंग पेज अगर ये लोगों को कन्वर्ट करना, दैट इज योर गोल, एंड दैट विल हैव एटलीस्ट the room is around 20 to 25% conversion rate. So think about it. अगर आपके बिजनेस में let's say कि in a worst case scenario 10% भी increase होता है conversion rate on your landing pages, how much money you can increase, make basically in a long term. So think, I hope you get the idea कि क्या कहना चाहता हूँ in terms of scales, so you understand it properly, right? If you have any questions about it, you can ask right now. तो आई होप इट्स क्लियर कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। तो अभी तक जो समझा, अंडरस्टैंड योर ट्रैफिक सोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैफिक सोर्सेज को समझे बिना कुछ नहीं होने वाला। वंस यू अंडरस्टैंड ट्रैफिक सोर्सेज में से 100% ट्रैफिक को कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली द होल गोल जो सीख रहे हैं ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट गेट टू अ लेवल ऑफ रियल प्रोबेबिलिटी इन योर लाइफ। रियल प्रोबेबिलिटी मतलब कि अगर आपको ये लगे कि यू कैन कन्वर्ट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इवन ऑन बायोलॉजिकल लेवल। इफ यू स्टडी बायोलॉजी ना, तो दिस सम पीपल, ह्यूमंस आर होमोजेनियस, मतलब कि ओवर टाइम क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी लोग जो सर्वाइव कर रहे गए, उनकी पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट हो गई। उसका एक सिंपल सा एक रीजन माना जाता है कि इट्स कॉल्ड अडेप्टिव ट्रेट्स। अडेप्टिव ट्रेट्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, there's a good book called Attach, उसमें 3 टाइप की पर्सनालिटी टाइप्स है, there's called secure, anxious and avoidant। सिक्योर ऐसे लोग जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, दे आर ओके टू गेट लव एंड शेयर लव, मतलब दे आर वेरी गुड फैमिली, एक दूसरे के प्यार करना इट्स ओके, फॉर देम इट्स वेरी नॉर्मल, ओके। देन देयर आर एंशियस पीपल, आपने देखा होगा कि हु आर लाइक बहुत ज्यादा शक्की लोग होते हैं, दे आर नॉट एबल टू यू नो मेक गुड रिलेशन। अगर उनके नजदीक कोई आता है, देन दे हैव एंशियस, दे वो उनको लगता नहीं कि दे डिजर्व लव एंड दे आर नॉट एबल टू गिव लव, दैट्स द सेकंड ट्रेट। एंड देन देयर समथिंग कॉल्ड अवॉइडेंट, मतलब कि अगर आप कोई बंदा उनके नजदीक आया, उनका इंडिपेंडेंस इज द मेन प्रायोरिटी। नाउ दिस आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल जो इवॉल्व हुए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रॉम अ इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू आस्क एनी बायोलॉजिस्ट, देन ही विल से कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ होगा कि पास्ट में एक थ्योरी है कि लेट्स से कि ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, जो सिक्योर लोग होते हैं, अगर उनका लव्ड पार्टनर मर जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे माइट डाई, दे माइट फील लॉट ऑफ हर्ट, बट जो पीपल हु आर इंडिपेंडेंट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन अ सेम वे लाइक सीन ऐसा हुआ होगा कि लेट्स से कि 1620 में आई थिंक देयर वाज अ फ्लू, जहाँ पे 2 से 3 करोड़ लोग आई गेस मर गए थे इन लंदन, मतलब इंग्लैंड में आई गेस 2 करोड़ लोग वहां पे मर गए थे उस टाइम पे। नाउ इमेजिन दैट, अगर उस सिचुएशन में जो भी ऐसे लोग होंगे जिनको प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वो आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वुड हैव डाइड, तो उनके बच्चे सर्वाइव नहीं करे। जो लोग सर्वाइव कर गए उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके ट्रेट ये थे कि दे आर ओके टू बी इंडिपेंडेंट। सो दैट्स इवन फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंसान है
everybody is different, so you can never treat everybody. आप सबको कभी खुश नहीं कर सकते. तो मेन गोल जो अभी तक सीखे उसका एक ही है कि फर्स्ट सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि हाँ इतने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू मैक्सिमाइज इट. बिकॉज प्रॉब्लम ये होगी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको यू वांट कि आप ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करें, पर मैक्सिमम का आइडिया तो होना चाहिए ना रफ, देन ओनली यू आर एबल टू कन्वर्ट. आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई वांट टू से कि आप 100% लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो उसके लिए अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सोर्स फर्स्ट, देन you know who you are targeting. You are targeting people, you are writing your whole landing page for maybes and maybes कि they are open to possibility learning something new या फिर नई प्रोडक्ट अगर आपकी है, और फिर ये डिजाइन करो कि उस टाइप के इंसान को अगर कन्वर्ट करने के लिए what I have to do, what kind of tricks and tools I have to use, which we are going to discuss. आगे हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं. So I hope it's clear to you all. Now there are few types of landing pages which you guys need to understand. काफी लोगों को नहीं पता, मतलब differentiation नहीं पता होता है. The problem is when you don't know the differentiation, communication become a problem. So there is something called as a main site landing page. Then something is a microsite landing page. And there is a standalone landing page. So basically मेन साइट लैंडिंग पेज ऐसा कोई लैंडिंग पेज की आपकी मेन वेबसाइट है, उसी का एक पार्ट है जहाँ पे कोई पेज है जहाँ पे यू आर having a one purpose, one objective, that's called a main site landing page. सिंपल सा डेफिनेशन है. माइक्रो साइट लैंडिंग पेज की ऐसी सेपरेट वेबसाइट जहाँ पे मल्टीपल पेजेस है, but every page has their own objective, that's called as a micro site landing page. Best example is ClickFunnels. उस बंदे ने इतना ClickFunnels को पिच किया कि लोग उसका प्रैक्टिकल जो नाम है वही भूल गए हैं. Actually, if you think about ClickFunnels or FlexiFunnel in India, those are from a technical point of view, it's called as a microsite landing pages. मतलब कि they have a website, आपको एक पेज नहीं मिलता, you get a usually get a multiple pages if you want to. आपको multiple pages मिलते हैं और वहां पे you have a like your own conversion actions on every page. So that's not a funnel, नहीं कह सकते, funnel is totally different concept, but people understand that as funnel, but वो funnel नहीं है. That is a microsite landing page. And then there is a standalone landing page जिससे आप में ज्यादातर लोग familiar होंगे, lead pages. कोई भी ऐसा पेज जहाँ पे you just have a one page on a very different platform. It could be lead pages. There are other, I forgot. Get response have the pages, and there are some other pages, other sites which provide the same service to you. Basically, there are three types of page which are very, very important. Now, if you guys have any questions, now I might take for a minute or two because मेरा गला जो है थोड़ा दर्द कर रहा है, but I'll just, and then I will continue. So let's talk about something. Yeah.
So now let's talk about a website for a minute कि let's say you have a website, आप कोई website बना रहे हो. Why I'm taking some broad things because I'll tell you there is on this call there are people who are in different things. For example, there is some people who are doing a e-commerce store, जो e-commerce का store बना रहे हैं. There are people who are doing UX UI. So I want to share few things which are very important for you guys to understand. This is the question you have to ask yourself or your clients for the most part कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो what are the most important thing you want to have on a landing page. Basically, what are the mission critical parts? Mission critical parts of your website. You have to ask anyone जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, अगर आपकी खुद की भी वेबसाइट है, what are the mission critical parts? Like for example, ऐसा कोई भी पार्ट, अगर let's say कि you have 10 pages on your website, कोई भी पेज if I take it down और मेरा बिजनेस बहुत like 20-30% impact नहीं करेगा, it will impact just 1 to 2%, then that's not a mission critical. Mission critical की जिसकी वजह से मेरा बिजनेस will पूरा ठप हो जाएगा. So that is something you need to understand कि what are the mission critical parts of your business. Let's say number one is usually for the most website is home page, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक होम पेज पे आता है because of most traffic. And जितना भी जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, your focus should be on that page also, because कहीं ना कहीं there is a when volume is higher, अगर वहां पे conversion rate बढ़ेगा तो उसका ROI भी बढ़ जाता है. Second is कि आपका जो ऑर्गेनिक सर्च है, टॉप ऑर्गेनिक सर्च पेजेस, वो कहाँ पे से आ रहा है और किस कीवर्ड से आ रहा है. That is something you need to understand. Third important thing, if you are into any e-commerce store kind of a website और या फिर कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, then category pages are important. Okay, you are showing people category because अगर कोई बंदा स्पेसिफिकली कोई कैटेगरी में ब्राउज कर रहा है तो यू नो सर्टेन इंटेंट कि हाँ उसको कुछ लेना है तो इसीलिए ही इज बाइंग इट. देन देयर इज अ प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन पेज. Then there is checkout and sign up pages which are very important. And if you have on your website, that's called internal site search. अगर आपके वेबसाइट पे बहुत ज्यादा कंटेंट है तो पीपल शुड बी एबल टू सर्च ऑन योर वेबसाइट कि आपके वेबसाइट के कंटेंट में से. नाउ इफ यू हैव योर ओन वेबसाइट या फिर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दिस आर द लाइक important stuff. These are most important when it comes to any business because for example home page, क्या वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है सबसे ज्यादा, यू हैव टू नो बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड अबाउट दैट इज वेल. और एक चीज है, इवन इफ यू लेट्स से यू अंडरस्टैंड लैंडिंग पेज कन्वर्जन, ओके, द प्रॉब्लम व्हाट गोइंग टू हैपन कि आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि किस पेज पे ज्यादा टाइम दे, किस पेज पे कम टाइम दे, बिकॉज टाइम विल टेक एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बेसिकली अगर आप 1 घंटा कोई पर्टिकुलर पेज को ठीक करने में लगाते हो तो आप वो सेम आवर को दूसरे पेज को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, यू आर लूजिंग दैट. ओके, so you want to make sure you are focusing on the Pareto principle में ऐसा कहा जाता है कि 20% activity bring the 80% result. So these are the 5. These 5 pages are the most important Pareto principle के हिसाब से कि आपको अपने चेकआउट पेज को थोड़ा सा improve करना चाहिए, आपको अपने साइन अप पेज को improve करना चाहिए, you have to improve your category pages as well. So this is something you have to understand. So I hope you got the clear because कई बार प्रॉब्लम क्या होगी कि इवन आफ्टर लर्निंग ऑल द थिंग्स यू एट लाइफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है प्रायोरिटाइजेशन. बिकॉज अगर आप ठीक से प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, प्रॉब्लम इज इट्स गोइंग टू कॉज यू अ प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन. क्योंकि
जिस चीज का वैल्यू नहीं होगा, यू विल बी वर्किंग ऑन दोज थिंग्स which have no value to it. Now, let's talk about the business models of different kind of website you might encounter in future, which are important to understand. जिनके landing page भी optimize भी different तरीके से होते हैं. So number one is e-commerce. So tell me, which is the biggest e-commerce site you know? Amazon, Amazon, Amazon. Let's see what we can learn from Amazon. Like we can do some study here and there. Can you guys, do you have any example कि recently कोई website पे गए थे जहाँ पे आपने buy किया नहीं किया, it depends, but you like कि हाँ website उतनी अच्छी नहीं है, उतनी optimized नहीं है. If you have any website like that कि जो उतनी ज़्यादा known नहीं है, but you have went on that website recently, so please let me know, or else I'll go on a website जो मैंने recently देखी. I hope the screen is visible. Yep. Okay, Misho. Then so what? Okay, Misho is a bekar site. Okay. Okay. So basically, see what you can do. You can learn. This is like e-commerce. E-commerce matlab ke they are selling products through web. That's the e-commerce business model. Okay. Now see, we can learn a lot from Amazon, especially because it's a very high tested website. These people test more than anyone. So if you think about it, this website, now let's do for comparison. Let's start Misho. Because ultimately you guys understand, these people are optimizing. If you think about difference between landing page and website, there's a simple key, koi particular page, when you say on a, let's say if I go on a book, sorry, this is not logged in, but अगर मैं कोई particular product पे जाऊंगा, then it's a landing page. You can say that is a landing page. This is a website, but still they have some form of purpose. They are, अभी मैंने इसमें sign up नहीं किया है, तो they are like doing something which is, to get me on the buying mode. If you think about it, especially Amazon पे, तो if you think, तो वहां पे जो स्क्रोल में सबसे पहला आया था उनका जो फेस्टिवल सेल आने वाला है उसके बारे में है, that is a good. But from second one, if you think about it, they mentioned here that it's starting from 69 rupees only. Now think about the person who come on Amazon जिसका शायद Amazon पे अकाउंट नहीं है. He might, there is no way to know कि वो बंदा किस चीज के लिए आया है, but at least they are optimizing the pricing, right? They are creating a low barrier to entry कि कोई भी बंदा जो आ रहा है, he will likely to take action. Especially अगर कोई बंदा इसी जोन में आ रहा है कि he wants this kind of products and he can get for like 69 rupees, and I can assure you, I can bet you guys कि they have some form of data there which tell them कि ज्यादातर जो first time buyers आते हैं, they are buying this electronic gadgets. I can bet you that. Second, home and kitchen, like this sounds like genius mode to me, because if you think about it, they have catered, let's say कि यहाँ पे, this is like, if you think about technology gadgets, okay, males are the ones who actually uses the gadget most. Okay, next one was home and kitchen, starting from 679 rupees. They catered both the genders. यहाँ पे हमको कुछ दिख भी नहीं रहा है कि what they actually used. But if you think about like what they are doing unconsciously, without even you noticing it, जो शायद आपको नहीं पता है. And then they have a kids section, male, female, kids.
Okay. Food and beverages. Home and kitchen. Okay. They have home and kitchen twice. I don't know why, but yeah. So I hope you guys are able to see what they are doing. Basically, they are catering all the potential audiences by the order of priority. सबसे पहले तो they are like this festival sale they are promoting. You know. Now let's see Meesho. Okay. Lowest prices, best quality shopping. Now, basically, from looking at the website, you can tell okay, their whole goal is they are trying. I like the website, utna bhi bura nahi hai, to be honest. When it comes to the first experience, they directly promoting the app, which sounds nice. Let's see the category pages. Product pages. What's wrong with the page? Can you tell me like what they are not doing well? Yeah. Okay. Website online store. Okay. Guys, if you think about ki there are pages which website online store, yeah. I guess this one, right? Okay, this is a bad page. Sale, what they are trying for. This is genuinely a bad page. What you guys can do, you can do the audit of these pages and send to these people as well. In logo ko bhi you can sell. At least you can give it a try. I mean, I can bet if you like, there's a chance that these people might, give you the work if you can get connected and if you can show actually what you can do. These are like men, nice. Okay, if I'm coming for the first time, still it's not that bad. I didn't like the first because there's no way I can know that they are talking about sale. The font is very bad. Yeah. Sale. There is some graphic designer who tried to be creative and who screwed the website basically. But at least I know this website is decent, I can say, because अगर आप यहाँ पे देखो तो they are like they have the good navigation. I know at least if I'm a man and I'm directly going, let's say, okay, basically हर पेज पे उन्होंने यही चीज करी है कि they mention the sale and they don't have anything. So I don't know they are optimizing it or not, but this is a bad website. So what you guys can do, especially people जिन लोगों को इन लोगों के साथ ऐसे किसी स्टोर्स के साथ काम कर रहे हो या फिर you are into development of this website and all, what you can do, you can control directly talk to them and show their mistake. For example, they don't have any social proof here. Like social proof is one of the proven things that increase the conversion rate. अगर social proof है तो conversion बढ़ेगा. That's for sure. जो यहाँ पे नहीं है, people are getting. And the thing is, there is no buy now button. Add to cart is still a mystery for, and this is a bad user experience. If you think about it, people, do in cart, then I have to go there, and then I have to like buy. So it's a bad consumer experience. So you can think about that as well. If you think about Amazon, like I'll tell you, go on Amazon and study Amazon. Amazon have some of the best things they're doing. On that, especially there's pages. If you think that it's very optimized pages,
there's like they have all the thing mentioned, यहाँ पे उनका rating है, they have rating mentioned. Plus if you think कि छोटी छोटी subtle चीजें क्या कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि people think copywriting is writing long copies only. Okay, not really. अगर कई बार छोटी छोटी चीजें is important. Okay, let's say कि I am a visitor on Amazon, first time ही आया हूँ, मुझे कोई particular चीज की need है urgently. This line, there's a higher chance this line will convert because I need it urgently. और उन्होंने फ्री डिलीवरी वाला भी लिखा है. So they are catering the all both audience by mentioning the two lines. If you think like दोनों में से अगर एक भी लिखते तो it might have made sense, but still they have options, have a very clean website. So you can take a lot of ideas from Amazon. मैंने काफी बार तो ऐसा भी देखा है कि only 3 left यहाँ पे कहीं पे होता है and they were like we'll order more for you. So they are saying कि only 3 left and like जहाँ पे bracket में दे और बाजू में bracket में लिखा है but we'll order more. So ultimately they are saying कि they are trying to create scarcity, but they also know कि some people will be turned off by the scarcity, so they also mention कि will buy it more. So this is something you can do. Now see, Amazon is something you can always go and check what they are doing, what better they are doing, what worse they are doing. In the same way, there are a lot of lead generation website. Do you know any idea which is just a lead generation website? If you know, let me know. Because you have to understand कि the nature of the business you are working with. अब जिस type के business में हो, landing page वहाँ पे different तरीके से function करेगा. For example, why? Because let's say you are a copywriter. Okay, there are copywriters. People in copywriting have a tendency कि they want to write a long copy. They know okay it converts and it converts for sure. It converts. The problem is कि you cannot write a long copy for grocery. That's the problem. In the same way, यहाँ पे like for example Amazon, on an e-commerce side, you need to be very precisely. You have to be very good in short sentences about the stuff. In the same way, आपकी जो industry है, आपका जिस business model में you are working with, you need to understand कि वो business model पे किस तरीके से उस particular चीज में क्या काम करेगा. So these are the things. Then there are media and publishing websites. Then there are support website, मतलब कि you are going for customer support के लिए there are companies जिन्होंने अलग से website बना दी है. There are blog websites, there are brand related websites, there are social community review ranking websites, there are auction websites, there are education certification websites. So make sure you know your industry in which you are working with, because the problem is कि हर type की landing page को जो convert ऑप्टिमाइज करने का जो तरीका है that is very different if you think about it, because you cannot दो इंडस्ट्री में सेम तरीके से चीजें काम नहीं करती. So this is something you guys need to understand. Now this is just a tip for the people who are working with the clients कि आप जिस भी इंसान के साथ काम कर रहे हो उसको you have to show कि उसको जो उसके दिमाग में क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसी किसी वेबसाइट के साथ काम कर रहे हो, मीडिया, लेट्स से he has a blog website. Okay, now whenever you are talking to a guy who have a blog website, जिसका website is all around blogging, okay, talk to them कि how your website will be more appealing कि people will stay on the page. बेसिकली जो ब्लॉग में होगा तो क्या होगा, वहां पे जो लोग हैं they want कि लोग ब्लॉग पढ़े. योर गोल इज डिफरेंट. तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जो भी जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो तो वो क्या सोच रहा है, उसका एंड गोल क्या है, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर टॉकिंग अबाउट दैट एंड गोल. कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि काफी वेंडर्स स्पेशली फ्रीलांसर्स दे आर लाइक के वो जो काम करता है मैं लाइक वो काम सामने वाले को बोलते हैं कि हाँ आई विल डू दैट फॉर यू, बट द थिंग इज यू हैव टू फ्रेम योर वर्क इन अ वे कि वो सामने वाले को लगे कि उसका कुछ फायदा होगा, उसको वो मिलेगा जो उसको
चाहिए। तो दिस इज समथिंग फॉर यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी वेबसाइट के साथ, किसी भी इंसान के साथ जब काम कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस टाइप के बिजनेस मॉडल में वो बंदा काम करता है। जस्ट अ मिनट। So I hope you got the basic idea so far कि क्या है. Now we are going to talk about my favorite topic is about actual conversion, about psychology of conversion and all. So what you are doing, what you are trying to do, if you think about it, you want people to act. Okay, that is your goal. Now to understand that you have to define few things. जो कुछ चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए. Number one is who is the key visitor roles. Then second thing is कि आपको वो क्रिटिकल टास्क डिफाइन करने पड़ेंगे कि जब वो वेबसाइट पे आके वो करेगा. एंड देन यू हैव टू स्ट्रक्चर द कंटेंट. आपकी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से कंटेंट को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर द कंटेंट, वो गोल्स फुलफिल हो. These are the three things which you need to understand. I hope अभी तक कोई क्वेश्चन हो. Just a minute, there are few questions if I want to see if I can take it right now. कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताओ. Should we give mobile number on landing page or not? Should we take what you are asking, like आप दूसरों का जब अपने लैंडिंग पेज पे दूसरों का फोन नंबर लेना चाहिए कि नहीं? दूसरों को सर एज अ मार्केटिंग पर्सन, अगर आप मार्केटिंग में है तो आई तो रिकमेंड कि यू गिव मोबाइल नंबर टू पीपल, बट प्रेफर करो कि कोई ऐसा नंबर दो जो आपका मेन नंबर नहीं है. ओके, तो सर देखो, बेसिकली अगर ऐसा कुछ सीन है तो इन अ मार्केट, इफ यू आर इन मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग में हो तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप नंबर दो. तो कई बार क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वो आपके नंबर का यूज किस तरीके से कर रहे हैं. देयर आर कंपनीज हु आर यूजिंग योर नंबर फॉर गुड, अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप वहां से कुछ सीख पाओगे. एंड देयर आर पीपल जो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो यू शुड गिव, बट आई विल सजेस्ट कि प्राइमरी नंबर ना दो. ओके, ऑन अ विजिटर ऑफ अ लैंडिंग पेज डिपेंड करता है सर. वो अभी आगे एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो ऑडियंस है उसका स्टेज कौन सा है. स्टेज इन द सेंस दैट अगर वो बंदा कोल्ड लीड्स है तो इट्स नॉट वायबल कि अगर आपके वेबसाइट पे लाख लोगों का डेटा आ रहा है, दिन के 10,000 कॉल्स आ रहे हैं, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली वायबल. बट अगर आपको पता है कि दे आर इंटरेस्टेड पीपल और आपका जो सेल्स आगे होने वाला है that is big enough to cover the cost, you should give. तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट आगे हम देखेंगे कुछ चीजों के बाद वो ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग्स. सबसे पहले तो बात करते हैं रोल्स की. You have to precisely define the roles of people who are coming on your website या फिर लैंडिंग पेज.
roles, what people are, उनके roles क्या है? Like for example, they could be prospect, clients, information seekers, information seekers. They could be potential clients. They could be investors. तो जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो वेबसाइट पे आने वाला इंसान है उसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पर्सन, एंड यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट इन अ वे कि उन लोगों को वो एक्शंस लेने में हेल्प करे. बेसिकली लेट्स से देयर इज हमने जैसे अमेजोन पे देखा तो अमेजोन हैज टू प्राइमरी कस्टमर्स. एक है ऐसे लोग जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, तो अमेजोन हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर देम. Then second type of people who have not bought it from them yet. तो एक हो गए cold leads and there are hot leads. तो in a same way आपको अपनी particular industry में you have to define कि आपके जो website पे visitors आएंगे वो क्यों आ रहे हैं and what is their role. For example, let's say a company like a Tinder, which is a dating service. तो वहां पे आने वाले लोग कौन से हो सकते हैं? People who have not signed up yet, जिन्होंने फ्री के लिए भी साइन अप नहीं करवाया. ऐसे लोग जिन्होंने फ्री के लिए साइन अप करवा दिया है, उनका प्रोफाइल है, उन्होंने पे नहीं किया. इन द सेम वे यू हैव टू डिफाइन कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस में कौन से टाइप के पीपल हु आर गोइंग टू कम ऑन योर वेबसाइट. फॉर एग्जांपल आई विल टॉक अबाउट वन ऑफ द कंपनीज आई एम इन्वॉल्वड इन, लाइव गुरुकुल. वहां पे इफ यू थिंक डायरेक्टली, अगर हमारी वेबसाइट जो मेन वेबसाइट है वहां पे आने वाले लोग जो है, नंबर वन पीपल हु बॉट द कोर्स. द कोर्स, people who have not bought the course. bought मतलब कि जिन्होंने पे किया. and there are third kind of people who have signed up for free course. up for a free course. So you guys need to understand कि आपकी जो वेबसाइट है वहां पे जो लोग आने वाले हैं, you have to understand what will be their role. Give me a minute. Give me a minute. I have the whole new structure of our website. I'll show you live. जो अभी live नहीं हुई है वेबसाइट, but I'll show you हमने उसमें से कुछ चीजें यूज करी थी. I hope. Is my screen visible to you guys? Can you please check? Is the screen visible now? Okay. So this is a new website. अभी ये website live नहीं हुई है. This is a अभी भी उसका development के last checking चल रहा है. So you guys know we use the similar kind of thing, thought process यहाँ पे. We thought कि who is going to come on our website first. The number one thing we have to cater for the most part is people जो लोग directly आ रहे हैं website पे,
बट दे हैव नॉट बॉट इट येट। एंड मुझे पता है कि हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक सोर्स नहीं आता है वेबसाइट के मेन पेज पे। हम लोग जितना भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो डायरेक्टली लैंडिंग पेज से सेल्स हो रहा है। तो इस पेज पे देयर इज लेस चांस कि आइदर व्हेन पीपल डायरेक्टली कमिंग ऑन दिस पेज, एंड हमने काफी चीजें करी है, वी हैव टू मेक श्योर कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक ना आए पेज पे। वी कॉन्शियसली वांट कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे नहीं आने वाला। सो वन ऑफ द रीजन, सो बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पे आने वाले ज्यादातर लोग दे आर ऑलरेडी नो अबाउट लाइव गुरुकुल। if people directly, for example, searching livegurukul.app, they know about it, right? So that is why we have put the number here. Simple reason था. Then what I have done कि अगर आपने देखा हो तो ये दो चीजें हैं, like I'll tell you little things, these are all part of landing page conversions as well. You have to cater to people, okay? यहाँ पे लिखा है access my course and login, दोनों चीजों का मतलब सेम ही होता है, you go on a very same thing. अभी शायद मुझे नहीं पता कि ये डेवलप हो चुका है। बेसिकली यू हैव टू लॉग इन है, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे फिर भी लॉग इन ही करना है, और यहाँ पे जाओगे तो भी लॉग इन ही करना है। बट वन थिंग विच आई अंडरस्टूड अबाउट अवर टारगेट ऑडियंस, कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है ना सारी, दे डोंट नो, उनके लिए दे आर नॉट टेक सेवी, उनको नहीं पता है कि यूज कैसे करना, उनको लॉग इन का मतलब भी शायद नहीं पता है। बट अवर केटर वॉज कि हाँ एक्सेस माई कोर्स मतलब लोगों को वो चीज समझ आएगा। माई वर्ड यूज करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये वर्ड चेंज किया था, वी चेंज द होल थिंग। वी सेड कि वी वांट टू मेक श्योर कि दे रीड द सेम थिंग, एक्सेस माई कोर्स। सो दैट वाज द थिंग। देन व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि जब लॉन्च होगा विल हैव अ 3 स्लाइडर हियर, उसमें we'll figure it out कि by seeing the data and everything कि who are the most 3 probable like people coming here, और किस स्टेज में वो लोग आ रहे हैं, and we'll make sure कि हम वो चीज को हाईलाइट यहाँ पे करें। Now we know, if you think about, there are featured course जिसका नाम बदलना बाकी था, these are something we are changing it, this is not going to be there, yeah, and these are the free courses, basically हम इसको ऊपर रखने वाले हैं। So we know कि when people are here, they are more likely to at least give us the data. उसके बाद है categories, and नीचे we have some mentions. Okay, blogs are here. हमने blogs भी ऊपर रखे हैं। Now the thing we have not done यहाँ पे कि what we could have done, जो हमने consciously नहीं करी है, कि we could have mentioned directly categories here, डायरेक्टली कैटेगरीज, बट वी डोंट वांट कि लोग डायरेक्टली स्विच करें कैटेगरीज पे, सो वी डिड नॉट मेंशन इट हियर। सो दिस वाज द प्लान वी हैव डन, और उसी तरीके से कि मैंने ये फिगर आउट किया था कि आने वाले लोगों, जितने भी लोग पोटेंशियली आने वाले वेबसाइट पे, आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो लोग जो है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उनकी जो जर्नी है वो स्मूथ रहे। मुझे चाहिए था कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पीपल डायरेक्टली कैन क्लिक दिस, अगर आप फोन में ये ऑपरेट कर रहे हैं तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे दैट्स विल डायरेक्टली कॉल, तो व्हिच इज आवर मेन सपोर्ट नंबर। वंस दिस वेबसाइट इज लाइव, आवर प्लान इज टू गेट एटलीस्ट 5 कॉलर्स, so almost we want to make sure at least 90% queries are solved. So this is something we have planned. In a same way, you guys have to decide कि आप जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को केटर कर रहे हो वो किस तरीके से आ रही है और आपके वेबसाइट पे उनका रोल क्या है। बिकॉज आई टेल यू द विजन फॉर दिस वेबसाइट इज वेल, इन लॉन्ग रन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज सिंपली ये जो है ये नंबर विल नॉट बी देयर, ये नंबर निकल जाएगा। नंबर निकल जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉग इन नहीं किया है, बिकॉज इसमें हमने एक लॉग इन फीचर, एंड फ्यूचर में वी विल ब्रॉडर द ऑडियंस, विल पुट मोर ट्रैफिक ऑन द वेब पेज इटसेल्फ यहाँ पे, एंड विल व्हाट इज द प्लान, आई विल शेयर द प्लान, होल प्लान कि किस तरीके से वी आर गोइंग मेकिंग देम द होल प्रोसेस। ओके, सो I hope you guys got the idea what I want to say. Basically you need to understand कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं what are their roles. You have to define the roles, otherwise the problem is कि you will never able to, आप
तब तक वो डिसाइड ही नहीं कर सकते, कि आपको पता ही नहीं कि उनको एक्शन लेना क्या है, वो क्यों आ रहे हैं, एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। बिकॉज अगर आप किसी की वेबसाइट पे जाओ एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, अगर आपको वो चीज नहीं मिली, यू विल ड्रॉप आउट, आप बाहर आ जाओगे। इमेजिन दैट लास्ट टाइम अगर आप किसी चीज कहीं वेबसाइट पे कुछ बाय करने गए थे, आपको पता ही नहीं चला कि बाय कैसे करें, तो शायद हो सकता है आपने वो प्रोडक्ट कभी बाय ही ना करा हो। इट हैपेंस मी विथ मी ऑल द टाइम। लास्ट टाइम मैंने, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कीटोफाई। सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे अमेज़न, मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने देखा एंड दैट इज नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो मैंने सेम प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट करा, अमेज़न पे गया एंड देन आई जस्ट बॉट इट। तो इन अ सेम वे यू हैव टू डिफाइन इट कि जितने भी लोग आने वाले हैं वेबसाइट पे, उनका रोल क्या है। So I hope you got the idea about roles. Just a minute. And one more thing I want to say guys, कि आप में से काफी लोगों ने सुना होगा अबाउट कस्टमर अवतार, कस्टमर पर्सोना, राइट? Customer persona and customer roles are different. पर्सोना मतलब के जो कस्टमर्स आ रहे हैं, वो आपने पहले उनका एक हाइपोथेटिकल फिगर आउट किया है कि ये इतनी एज का है, ये माइंडसेट है, ये है, बेसिकली यू नो अबाउट द कस्टमर। नाउ व्हेन आई से कस्टमर रोल्स मतलब कि वो वेबसाइट पे आया है, ही नोज कि व्हाट एक्शन ही वांट्स टू टेक, वो ही इज वेरी प्रिसाइज अबाउट इट। हो सकता है दैट इज रोल्स आर नॉट वेरी इजीली चेंजेबल, कि वो दैट इज समथिंग यू डिफाइन, कि आपको पता है कि आपका कस्टमर्स आएगा तो यू कैन टेक देम ऑन अ जर्नी, कि उसको ये काम करने के लिए आपकी वेबसाइट पे आएगा, दैट इज समथिंग मोर इन योर कंट्रोल। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जितने भी लोग आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, यू हैव दैट स्ट्रक्चर्ड प्लान कि वो किस, उनका रोल क्या है। Just give me a minute. तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट रोल्स, कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जितने भी लोग आने वाले हैं, उनके रोल्स क्या है। नाउ वट एवर यू चूज कि इनके रोल्स जो है, उसके बाद यू हैव टू डिफाइन कि देयर जर्नी क्या होगी और वो टास्क क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई थिंक कि हु इज अ बायर, मेरे कोर्स जो लाइव गुरुकुल पे था, वो बंदा लेट्स से ही इज कमिंग ऑन अ वेबसाइट, माय थॉट प्रोसेस वाज कि अगर वो वेबसाइट पे आया, लेट्स से ही नोज, यहाँ पे ये नेविगेशन है एंड यहाँ पे हमने लिखा है एक्सेस माय कोर्स, यहाँ पे फोन नंबर है नाउ, एंड यहाँ पे लॉगिन का है। नाउ लेट्स से कि दैट पर्सन इज वेरी लिटिल सोफिस्टिकेटेड, ही नोज, तो वो आया एंड ही इज लाइक, उसको पता है कि लॉगिन करने से ही कैन गेट एक्सेस हिज कोर्स, he will not even scroll depth पे नीचे भी नहीं जाएगा, he will directly here go log in and he can access his course, next page पे he can log in and access the course। in a same way, अगर उसको नहीं पता है कि लॉगिन से कोर्स में एक्सेस होता है, तो ही विल, दैट्स अ सेकंड ऑप्शन, कि यहाँ पे हो जाएगा, and that is the third option। Now if you think about, there is little psychology involved here,
हमने नंबर यहाँ पे रखा था, वन ऑफ द रीजंस वाज कि इफ यू थिंक अबाउट ह्यूमन आई, अगर किसी भी वेबसाइट, लॉट ऑफ रिसर्च कि ह्यूमन आई जो है, अगर ये वेबसाइट है आपकी, तो ह्यूमन आई जो है इट मूव्स फ्रॉम लिस्ट दिस टू दिस। वन ऑफ द रीजंस इज कि जब आप फोन नंबर रखते हो अपनी वेबसाइट पे, दैट ब्रिंग ट्रस्ट, पीपल नो कि दे कैन गेट इन टच विद समवन, तो उसकी वजह से फर्स्ट आई जो उनका जाएगा दैट विल गो ऑन द नंबर। नाउ वी वांट टू मेक श्योर, बिकॉज जिस बंदे को पता है कि लॉगिन करने से होगा, ही इज लेस फ्रीक्ड आउट, उसको स्ट्रेस लेवल उस बंदे का कम होगा। सो वी, सेकंड थिंग वी पुट हियर एक्सेस माय कोर्सेज एंड देन पुट लॉगिन बिलो दैट। दैट वाज सिंपली द रीजन फॉर डूइंग इट। हमको अगर नंबर यहाँ पे रखना होता तो रख सकते थे, बट द पोजिशनिंग ऑफ द नंबर इटसेल्फ दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्या होगा कि अगर नंबर यहाँ पे हो रहा है, द ट्रस्ट फैक्टर जो पहले आना चाहिए था, एंड दिस हैपेंस ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, माइक्रो मिली सेकेंड में पीपल मेक डिसीजन एंड जजमेंट्स। लाइक लेट्स से व्हाट हैपेंस इफ यू थिंक अबाउट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, अगर कोई बंदे को वो सेफ्टी फील नहीं हुई एंड ही इज स्ट्रेस्ड आउट, आई बेट ऑन इट, अगर यहाँ पे आई कैन टेस्ट इट इन फ्यूचर, अगर आप में से कुछ लोग कनेक्टेड है, आई कैन शो यू द रियल एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे रखूं और यहाँ पे रखूं, यहाँ पे एटलीस्ट 20% कॉल ज्यादा आएंगे। I can bet on it just because कि यहाँ पे जब मैंने रखा है, their stress will trigger, stress will go up and they're more likely to call अगर if they found out the solution। ये तो ऐसा ही है कि कोई बंदा बहुत कहीं पे गया है, he is like very डर गया, और उसके बाद उसको कोई इंसान मिला, he is more like to react, और in the same way you, so आपको भी समझना पड़ेगा कि how you are designing your website, and psychology is something we going to learn next। बट ये तो आउट ऑफ ब्लू जो आया था, जो थॉट प्रोसेस के साथ हमने कुछ चीजों को पोजीशन करा था। सो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रोल्स है उनके लिए, देन यू हैव टू डिफाइन द टास्क, कि वो कौन से टास्क करेंगे आपकी वेबसाइट पे, इवन लैंडिंग पेज वेयर यू जस्ट द पर्पस इज सेलिंग इट। ओके, लेट्स से कि अगर आपका पर्पस है टू सेल्स, then yours should be कि let's say कि they will read the headline, then they will read the whole thing like this, मतलब पूरा वो लोग पढ़ेंगे। Now this is something for you guys to understand कि ये चीज पूरा वो इस तरह से पढ़ने चाहिए, because अगर वो यहाँ let's say कि अगर आपका जो कॉपी है वो इस तरह से लिखा नहीं गया कि they are reading the whole thing, then you have to plan out as well कि बीच में इस तरह से लिखो जहाँ बुलेट पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस आता है, वेर यू आर लाइक बीच में सब हेडलाइंस का इंपॉर्टेंस आता है। सो इट्स 12 and some people are asking for break. Just give me a second, I'll check कितने के बाद। okay so let's do this, I'll give a break। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज जो मुझे सिखानी है, दैट इज वन थिंग ओनली, दैट्स अ साइकोलॉजी, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। I was supposed to continue till 5, but the problem is I have some urgent thing to do, so I'll continue till 3। so हम 1 बजे फिर से start करते हैं। In 2 hours I am going to talk about 5 different type of personality typing systems and how you can design your own personality typing system as well। अगर आपको करना है, that will give you a massive advantage in terms of website development, और आप किस तरह से लोगों को जज कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी टाइप सिस्टम खुद डेवलप करके या फिर किसी और का यूज करके तो कर ही सकते हो, बट हाउ यू कैन डेवलप योर ओन पर्सनालिटी टाइपिंग सिस्टम एज वेल, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू टॉक। स्पेसिफिकली हाउ यू कैन डिजाइन योर लैंडिंग पेजेस, जहाँ पे लोगों को स्पेसिफिक ट्रिगर्स करवा के हाउ यू कैन इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट, हाउ टू डू, basically we are going to talk about the psychological stuff। So join me at sharp 1, at 1 I'll start। मुझे 3:30 को कहीं पे जाना है, so I'll make sure कि मैं 1 से 3 के बीच में सब कुछ खत्म कर दूं। So I'll start at sharp 1, so see you soon guys।